Namaskar kids. I hope you all are good and doing well. So I want you to take out my new canvas English at your fingertips literature book. So today we will do the chapter Cop and Anthem, which is the chapter number 11. So let's start. Wait, before starting, please like the video, subscribe the channel and share it as much as you can. Let's go. So on the page number 110, the chapter number 11 is. So we'll open page number 110. Yes. So, the cop and Anthem. Should we get what we want or what we need? What do you think is the difference? So, this is asking that हमें क्या मिलना चाहिए, हम जो सोचते हैं या हमें जो चाहिए या हम जो चाहते हैं या हम जो चाहिए. हम चाहते हैं जैसे हम बहुत बड़े बड़े सपने करते हैं, लेकिन चाहिए हमें बहुत कुछ होता है. जैसे एक इंसान है, वो सपने करता है कि मेरे पास ये होगा वो होगा, लेकिन उसकी नीड सिर्फ थोड़ी सी है, लेकिन वो बहुत बड़ी की डिमांड करता है. So that is the difference. So, this story is about a boy named Soapy who is homeless, and he is making his plans to how to spend his winters because he has no home. So, how to cut the cold winters. So, let's read his plans. That's how he cuts his winters. Let's go. Okay. So, let's read. Soapy moved endlessly on his seat in Madison Square. Winters were approaching. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. So it's saying that Soapy endlessly हिल रहा था अपनी सीट से Madison Square में. So what is Madison Square? Madison Square is a place in New York City. सो विंटर्स आ रही थी, यानी सर्दियाँ आ रही थी. उससे कोई रास्ता निकालना था कि वो अपनी सर्दियाँ कैसे निकाले. His hopes for the winter were not high. He was not thinking of sailing away on a ship 3 months in prison on Blackwell's Island. So what is Blackwell's Island? It is a narrow island located in the East River in New York. Blackwell's Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cop. This seemed to Soapy most desirable thing in the world. There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to the judge. The judge would do the rest. यानी वो सोच रहा था कि विंटर ज़्यादा पास तो है नहीं, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो वो सोच रहा था कि मैं एक शिप पे सेल करके चला जाता. तो 3 महीने ब्लैकवेल के आइलैंड में थे जो उसे चाहिए था. तो 3 महीने उसे खाना मिलता जेल में रोज़, एंड सोने को रात को बेड भी मिलता. 3 महीने वो नॉर्थ कोल्ड की विंड से भी सेफ रहता और पुलिस से भी सेफ रहता. तो ये सोपी को अच्छा लग रहा था और मोस्ट डिज़ायरेबल लग रहा था. इसके बहुत ही आसान वेज थे. तो सोपी को सबसे ज़्यादा प्लेजेंट वे लगा कि वो एक रेस्टोरेंट में जाता है एंड वो एक खाना खाता है. फिर वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. फिर
पुलिस बुलाई जाती, पुलिस उसे ले जाती अरेस्ट करके, फिर जज उसे 3 महीने की सज़ा दे देता, तो उसकी विंडोज़ का तो काम हो जाता, because he was homeless and he was thinking how to cut his windows. Soapy left his seat and walked out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started on the Broadway. He stopped at large and brightly lit restaurant. तो सोपी ने अपनी सीट लीव करी, मैडिसन स्क्वायर से वो निकला जहाँ पे ग्रेट स्ट्रीट थी, वो ग्रेट स्ट्रीट यानी ब्रॉडवे थी, वो 5th एवेन्यू गया। तो इस वाइट स्पेस में वो स्टार्ट हो गया नॉर्थ में, ब्रॉडवे में वो एक स्टॉप हुआ एक बहुत बड़े से लेट यानी लाइट्स थी जहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो देखिए ये पिक्चर है, ये सोच रहा है कि मैं जेल में चले जाऊँगा, मुझे खाना मिल जाएगा, मुझे सोने को बेड मिल जाएगा रात को, या तो ऊपर वाला मिलेगा या तो नीचे वाला मिलेगा, और वो सोच रहा है कि यहाँ पे मैं अपना लगेज रख दूँगा और यहाँ पे मैं सो जाऊँगा। This was where the best food was served and the best people and the best clothes appeared every evening. Soapy believed that above his legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. तो ये जगह जहाँ पे सोपी रुका था वहाँ पे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा फूड सर्व होता था, वहाँ पे बेस्ट लोग आते थे और बेस्ट कपड़ों में आते थे हर इवनिंग, हर शाम को। तो सोपी ने बिलीव करा कि उसके लेग्स के ऊपर उसका वो ठीक ही लग रहा है, उसका फेस क्लीन है, उसका कोट गुड है, उसका कोट अच्छा है, और अगर उसे एक टेबल मिल जाए तो उसका काम तो हो जाएगा। बट as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. Soapy turned off Broadway. यानी सोपी ने जैसे ही पैर रखा अंदर, जो हेड वेटर है उसने सोपी का टूटा हुआ ये जूता देख लिया एंड उसके फटे हुए पैंट्स देख लिए, तो उसने स्टॉप कर दिया सोपी को वहीं एंड सोपी को बाहर निकाल दिया। तो सोपी ब्रॉडवे की तरफ चला गया। At a corner of 6th Avenue was a shop with white glass window, bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was first among them. Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. Where was the man who did that? asked the cop. यानी वो कॉर्नर में गया 6th एवेन्यू के, तो एक शॉप थी जिसमें बड़ा सा ग्लास विंडो था, तो सोपी ने एक पत्थर उठाया एंड उस ग्लास विंडो पे फेंक दिया, तो सारी विंडो टूट गई। तो सारे लोग एक तरफ हो गए एंड एक पुलिस वाला था जो सबसे पहले आया था, तो सोपी खड़ा रहा, उसे वेट था कि कब ये पुलिस वाला मुझे अरेस्ट करेगा और कब मैं जेल जाऊँगा और कब मैं अपनी विंडोज़ निकालूंगा। लेकिन सोपी खड़े खड़े स्माइल करता रहा। तो उस पुलिस वाले ने पूछा कि वो इंसान कहाँ है जिसने ये किया है। कॉप ने पूछा, यानी पुलिस वाले ने पूछा। नेक्स्ट पेज। Don't you think that I might have done it? said Soapy. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. But the cop's mind would not consider Soapy. Men who break the windows do not stop there to talk to the cops. They run away as fast as they can. The cops saw a man further along the street running. He ran after him and Soapy walked slowly away and he had failed twice. यानी सोपी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि ये मैंने करा है, तो वो फ्रेंडली बात कर रहा था एंड वो अच्छे से बात कर रहा था और वो खुश था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो उसकी तरफ ही आ रहा था। लेकिन जो पुलिस वाले का माइंड था वो नहीं कंसिडर करता था कि सोपी ही वही इंसान है जिसने विंडो तोड़ी है। वो तो ये कह रहा था पुलिस वाला कि
लोग जो विंडो तोड़ते हैं वो वहीं स्टॉप नहीं हो जाते और पुलिस वालों से बात नहीं करते. वो जितनी फास्ट भाग सकते हैं उतनी फास्ट भागते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्टेंस. तो फिर वो कह रहा था कि वो पुलिस वाले ने कहा कि जितनी तेज़ वो भाग सकते हैं वो उतनी तेज़ भागते हैं. तो पुलिस वाले ने एक इंसान को देखा जब भाग रहा था स्ट्रीट में, तो पुलिस वाला भी उसके पीछे भागने लग गया. पुलिस वाले को लगा कि ये वही इंसान होगा जिसने विंडो तोड़ी है. एंड सोपी वॉकड स्लोली अवे. ही हैड फेल्ड ट्वाइस. यानी सोपी धीरे धीरे चलकर चला गया क्योंकि वो दूसरी बार फेल हो गया था. पहली बार उसके टूटे हुए जूते देख लिए थे, दूसरी बार वो पुलिस वाले की वजह से हो गया. Across the street was another restaurant. It was not fine as one on Broadway. The people who went there were not as rich. The food was not as good. Into this, Soapy took his old shoes and torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. When he had finished all, he said he had no money. Go, call a cop, said Soapy. No cop for you, said the waiter. He called another waiter. The two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly, one part at a time, and beat with dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. A cop who was standing near laughed and walked away. यानी गली में एक दूसरा रेस्टोरेंट था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था जैसे वो पहले वाला रेस्टोरेंट था. उसका खाना इतना अच्छा नहीं था जैसे पहले वाले रेस्टोरेंट का था. उसमें लोग इतने रिच नहीं आते थे, इतने अमीर अमीर लोग नहीं आते थे जैसे पहले वाले में आते थे. तो सोपी उस रेस्टोरेंट में अपने टूटे हुए जूते, पुराने टूटे हुए जूते और अपने फटे कपड़े ही लेकर चला गया. तो अब फिर उसको देख तो लिया सबने, लेकिन कोई भी ने उसे स्टॉप नहीं किया. तो वो एक टेबल पे बैठ के और वो एक खा रहा था बड़ा सा डिनर. जब उसने फिनिश कर लिया तो उसने कह दिया कि उसके पास कोई पैसे नहीं है. तो सोपी ने कहा कि जाओ पुलिस वाले को बुलाओ. तो वेटर ने कहा कोई पुलिस वाला नहीं चाहिए तुम्हारे लिए. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. दोनों वेटर ने सोपी को उसके लेफ्ट ईयर के वन फेंक दिया बाहर हार्ड स्ट्रीट पे. तो सोपी धीरे से उठा एक पार्ट एट अ टाइम. फिर उसने डस्ट उतारी अपने कपड़ों से, डस्ट झाड़ी अपने कपड़ों से. एंड फिर उसका जो प्रिजन का सपना था, उसका जेल का सपना था, वो एक सपना ही रह गया, हैप्पी ड्रीम. तो एक पुलिस वाला था, वो लाफ कर गया, वो हंसा और वो चला गया. Soapy traveled almost half mile before he tried again. When he stopped, he was near several theaters. He saw a cop standing in front of a big theater. He thought to do something else. He thought of something else to try. He had begun out to shout as if he had too much to drink, and he danced. He cried out. तो सोपी ऑलमोस्ट आधा माइल चल चुका था. उस कुछ ट्राई करने से पहले उसने आधा माइल चल लिया. तो जब वो स्टॉप हुआ, कई सारे थिएटर्स के सामने स्टॉप हुआ. तो एक पुलिस वाला खड़ा था एक बिग थिएटर के सामने. तो उसने सोचा कि कुछ और ट्राई करते हैं. तो वो चिल्लाने लग गया थिएटर के बाहर कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, एंड वो डांस करने लग गया. बट the cop turned back to Soapy and said to a man standing near him, "It is one of those college boys. He won't hurt anyone. Let him shout." Soapy was quiet. No cop going to touch him. यानी कॉप ने उसको नहीं पकड़ा. बैक टर्न कर ली सोपी की तरफ और एक इंसान को कहा, एक आदमी को कहा कि कुछ नहीं करेगा, वो कॉलेज बॉयज़ की तरह में से ही उसे चिल्लाने लगा. तो सोपी चुप हो गया था क्योंकि कोई भी पुलिस वाला के उसे पकड़ने नहीं वाला था. At last, Soapy came to one of the quiet streets on east side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square Garden. He was going to home, although
home was only a seat in park, but on very quiet corner, Soapy stopped. यानी वो सोपी आखिर में वो सुनसान गलियों में ईस्ट साइड ऑफ सिटी में सुनसान गलियों में चलने लग गया. तो जब वो हेयर चला वो टर्न हुआ हेयर एंड वो चलने लग गया साउथ की तरफ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में. वो घर जा रहा था. ऑल्दो उसका घर तो एक सीट ही थी पार्क में, एक बहुत ही सुनसान से कॉर्नर पे जहाँ पे सोपी एक सीट थी पार्क में, लेकिन सोपी एक बहुत ही चुपचाप से कॉर्नर में रुका. Here was old church. Through one colored glass window came a soft light. Sweet music came to Soapy's ear and seemed to hold him there. And the anthem that came from the church held Soapy there, for he had known it well long. In those days, his life continued. Such things as mother and flowers, and high hopes and friends, and clean thoughts and clean clothes. यानी सोपी यहाँ पे एक बहुत ही पुराना सा चर्च था. तो वहाँ पे एक कलर्ड ग्लास विंडो में से एक सॉफ्ट सी लाइट आ रही थी. जो सुरीला गाना था वो सोपी के ईयर्स में आया और उसे वहीं पकड़ लिया, यानी उसे वहीं होल्ड कर लिया इस गाने ने. और जो एंथम था जो चर्च से निकल रहा था उसने सोपी को पकड़ लिया. तो वो वाला पकड़ना नहीं जैसे मैंने इस पेंसिल को पकड़ लिया, मैंने अपने हैंड को पकड़ लिया. अभी जैसे मैंने अपने हैंड को पकड़ लिया, ये वाला पकड़ना नहीं बल्कि यानी अट्रैक्शन है वो. तो उन दिनों सोपी के पास क्लीन कपड़े होते थे, मदर होती थी, फ्लावर्स होते थे, हाई होप्स होती थी, फ्रेंड्स होते थे और क्लीन थॉट्स होते थे. तो ये वो चर्च है, ठीक है. यहाँ पे ये सोपी है, ये चर्च है, यहाँ पे ये साइन भी है. There was a sudden and wonderful change in his soul. He would fight to change his life. He would make a man of himself again. There was time. He was young enough. He would find his old purpose in life and follow it. That sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. Soapy felt a hand on his arm. He looked quietly around into broad face of the cop. What are you doing hanging around here? Asked the cop. Nothing, said Soapy. You think I believe that, said the cop. Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. Come along, said the cop. 3 months on the island, the judge. सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग. यानी सोपी पहले चाहता था कि मुझे जेल हो जाए, लेकिन जब वो चाहता था कि अब मुझे जेल ना हो, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा अपनी लाइफ में दोबारा, तो उसने एक न्यूयॉर्क के कॉप से आर्ग्यू कर ली एंड उसे 3 महीने की जेल हो गई. तो ये हुई है अडैप्ट, एक एक्सट्रैक्ट है. द कॉप एंड एंथम अडैप्टेड है और जो लिखी है ओ हेनरी. तो अगर आपको इसके आगे का पढ़ना है तो आप ये पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड टेल इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर इफ यू हैव एनी डाउट्स. Stay safe. Bye bye. Namaskar. Like, subscribe. Like the video. Subscribe the channel. Share it. Bye bye.